Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. Today we are going to solve the questions of chapter number 5, which is major domains of Earth. We have completed the whole chapter in the last 2 or 3 videos. Today we will solve the questions. The first question is, what are the major domains of the Earth? That's the major domains of Earth are lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere. And the major continents of the Earth. The major continents of the Earth are Asia, Africa, Europe, North America, South America, Australia, and Antarctica. There are the 7 major domains of 7 major continents of the Earth. And the next question is, name the 2 continents that lie entirely in the southern hemisphere. The 2 continents that lie entirely in the southern hemisphere are, the first one is Australia and Antarctica. And next is, name the different layers of atmosphere. The different layers of atmosphere are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. And the next question is, why is Earth called the blue planet? अर्थ को ब्लैक प्लैनेट क्यों कहते हैं? बिकॉज आंसर इसका है, मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, देयरफॉर फ्रॉम आउटर स्पेस इट अपीयर्स ब्लू, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. आपको पता ही होगा कि अर्थ पे ज़्यादा तो किसकी मिकदार ज़्यादा होती है, वाटर की 71%. फिर हम जब आउटर स्पेस में जाके इसको देखते हैं तो ये ब्लू दिखाई देता है, दैट्स वाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why is northern hemisphere called a land hemisphere? Northern hemisphere को land hemisphere, because northern hemisphere is called a land hemisphere because the greater part of the land masses lies in the northern hemisphere. अच्छा, why is biosphere important for living organisms? Biosphere क्यों important है? Biosphere important for living organisms because life exists here due to the presence of 3 major components, that's land, air and वाटर. बायोस्फीयर में ही जो बेसिक नीड्स इंसान की है वो फुलफिल बायोस्फीयर में, जहाँ पॉसिबल लाइफ होती है. एंड 3 मेजर कंपोनेंट्स जो होती है, लैंड, एयर एंड वाटर फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ, वो इसी में प्रेजेंट होती है. पर मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज, द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया इज इसको आंसर क्या है? द यूरल्स. एंड जो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को सेपरेट करता है. और इसके बाद द कंटिनेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय, इसका ये कौन इसके लिंक कौन करता है? द अस्थम्स इसको लिंक करता है. द मेजर कंटेनर एटमॉस्फेयर बाय परसेंट इज डैश, कौन सा एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी होती है? वो तो हमें पता होती है, नाइट्रोजन की होती है. द डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्ट्स ऑफ सॉलिड रॉक्स इज कॉल्ड लिथोस्फीयर विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट. इसका है अफ्रीका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, और एशिया इसका है. द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड डैश and is dash in the Pacific Ocean. आपको मैरीन इसको मैरीन ट्रंच कहते हैं. The dash ocean is named after a country. The Indian Ocean is named after its country. The dash is the narrow contact zone of land, water and air that supports life. कौन है वो? बायोस्फीयर सपोर्ट लाइफ करती है, जो इसमें लैंड, वाटर, एयर प्रेजेंट होता है. The continents of Europe and एशिया टुगेदर इज नोन. यूरोप और एशिया को इकट्ठे हम क्या कहते हैं? यूरोशिया कहते हैं, EURASIA. द हाइस्ट माउंटेन पीक ऑन अर्थ इज, वो कौन होता है? हाइस्ट माउंटेन रेंज, वो है माउंट एवरेस्ट. ठीक है ना बच्चों? आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ये सवालात क्वेश्चंस आप लिखेंगे इंशाल्लाह इन योर नोटबुक्स एंड देन ट्राई टू रिमेंबर दीज. ठीक है? अस्सलाम वालेकुम.